So there are 10 points in a plane, no 3 of which are collinear. Okay. Find out how many distinct lines can be drawn through these points. Okay. All right. So these are your 10 points. Okay. And no 3 of which are collinear. Guys, मैंने no 2 of which are collinear क्यों नहीं बोला है? Because 2 points are always going to be collinear. You can always form a straight line through them, right? Okay. So no 3 of them are collinear बोलने से क्या हो जाएगा कि जैसे कि ये नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन अगर ये दिखाया है, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से यू आर गेटिंग द सेम लाइन. ओके, if 3 points become collinear, okay, that means इन तीनों से एक ही लाइन पास हो रहा है. Okay, that's not the case over here. Okay, no 3 points are collinear. अगर दिख भी रहा होगा, please ignore that. Okay, so no 3 points are collinear over here, and we need to find out how many lines can be drawn through these points. Okay, very simple. Okay, कोई भी line form करने के लिए you need to join any 2 points. Okay, join any 2 points here. Okay, so basically 10 में से हमें 2 points select करना है. Selecting 2 points out of 10. This can be done in 10C2 number of ways, and 10C2 is 10 into 10 minus 1 divided by 2. 10 into 9 by 2, the answer is 45. So in this case, you will have 45 lines that can be drawn to these 10 points. Okay. इसी क्वेश्चन को हम स्लाइटली चेंज करते हैं गाइस. ओके, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ व्हिच एग्जैक्टली 4 आर कोलिनियर. फाइंड आउट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू दीस पॉइंट्स. ओके, नाउ सपोज 4 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होते, तो पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसके जस्ट पहले. ओके, 10 पॉइंट्स, दो सिलेक्ट करना है, 10C2 वेज. ओके, द नंबर ऑफ वेज इज 45. ओके, नाउ इसमें से 4 पॉइंट सपोज कोलिनियर हो गए. ओके, इफ दीज 4 पॉइंट्स बिकम कोलिनियर, इन सबसे एक ही लाइन पास होगी. तो इन चारों पॉइंट से एग्जैक्टली एक ही लाइन पास होगी. सो हमने जो सारे 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कंसीडर किए थे, एंड उनसे जो हमने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड किया, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड की थी, कितना 10C2 जो आई थी, उनमें से हमें एग्जैक्टली 4C2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगी. बाय 4C2, बिकॉज हमने जो 4 पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मान के उनसे लाइन कंसीडर की थी. ओके, 4 में से 2 4C2 वेज में. ओके, दे वोंट गिव यू एनी डिफरेंट लाइंस, राइट? Okay, so out of these 4, 2 points can be selected in 4C2 ways, which is nothing but 6. So 45 में से I will subtract 6, and that is 39 lines. Okay, but understand guys, इन चारों points में से completely सारी lines तो ignore नहीं करेंगे हम लोग, right? इन चारों points से एक line तो pass हो ही रही है, this blue line, isn't it? Right? So 39 में हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, जिससे कि एक line अपने आंसर में include हो जाए. So we have 40 possible lines that can be drawn. Okay? इसका एक और guys approach है solve करने का, I'll discuss. Suppose यहाँ पे in this question exactly 6 points are non-collinear like these. I'm just drawing these 6 non-collinear points, and there are 4 points which are collinear. Okay, I call this set A and I call this set B. Okay, I'll take 3 cases. पहला cases, suppose मैंने इस set से 2 points ले लिए, उनसे एक line form कर रहा हूँ. ओके, एंड इससे एक भी पॉइंट नहीं लिया. दूसरा केस, इस सेट से एक पॉइंट लिया, इस सेट से एक पॉइंट लिया. लास्ट केस, इससे एक भी पॉइंट नहीं लिया, दोनों पॉइंट इससे ले लिए. राइट? ओके, नाउ गाइस 6 पॉइंट्स आर अवेलेबल इन दिस सेट ए. उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, कैन बी डन इन 6E2 वेज. ओके, 6E2 इज नथिंग बट 50. राइट? सेकंड केस क्या है गाइस, एक पॉइंट इस स्लॉट से लिया 6 पॉइंट्स के. ओके, और एक पॉइंट इस स्लॉट से लिया 4 पॉइंट के. ओके, so this is nothing but 6C1 into 4C1. 6C1 वेज में इससे एक पॉइंट ले सकते हैं, into 4C1 वेज में इससे एक पॉइंट ले सकते हैं. so 6 into 4 we have 24 वेज, राइट? एंड अगर दोनों पॉइंट इस जगह से लिया है, इस स्लॉट से लिया है, तो एक ही लाइन मिलेगी. Okay, so 15 plus 24 plus 1, the total number of lines is nothing but 40 once again. Okay, there are 10 points in a plane, no 3 of which are collinear. Find how many distinct triangles can be drawn through these points. Okay, again very simple. Triangle draw करने के लिए आपको exactly कितने point चाहिए? आपको exactly 3 point चाहिए. Okay, it is given that no 3 of which are collinear. Tension नहीं है. 10 में से आपको 3 point select करना है. 10C3 ways. Okay, the answer is 1098 divided by 3 into 2, 720 upon 6. The answer is 120. As simple as that. Okay. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है गाइस, फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीस पॉइंट, 10 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 4 ऑफ व्हिच आर कोलिनियर. अगेन सेम अप्रोच, पहले हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं. ठीक है, इफ 10 पॉइंट्स आर देयर, 3 पॉइंट्स लेकर के तरीके कितने उसमें से 120, राइट? नाउ फ्रॉम दिस वी सबट्रैक्ट एग्जैक्टली 4C3 वेज, जहां पे आप ट्रायंगल इन चारों पॉइंट्स में से बना रहे हो, राइट? इन चारों पॉइंट में से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट? ओके, सो जितने भी हमने इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट से लेकर ट्रायंगल बनाए थे, वो सारे पॉसिबल ही नहीं है. Okay, so from 120 you will subtract 4C3. 4C3 is equal to basically 4 only. So the final answer is 120 minus 4 equals to 116. Okay, so there are 6 points which are non-collinear and 4 points which are collinear. Okay, देखो यहाँ से हम लोग तीनों पॉइंट सिलेक्ट तो नहीं कर सकते. At max we can select 1 point. तो यहाँ से 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे to form a triangle. Okay, अगर यहाँ से 2 सिलेक्ट किए तो यहाँ से 1 पॉइंट लेना पड़ेगा. Okay, और अगर मैंने यहाँ से 3 पॉइंट लिए, यहाँ से एक भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट? ओके,
सो 6 पॉइंट अवेलेबल है, 2 सिलेक्ट करना है, दिस कैन बी डन इन 62 ways. Okay, in this case 1 point select करना है, so 4C1. Okay guys, 6C2 is 15 into 4 will be basically 60. Okay, अब यहाँ से 1 point select करना है 6C1 ways में, और यहाँ से 2 point select करना है 4C2 ways में, so 6 into 6 will be basically 36. Okay, अब तीनों point यहाँ से select करने हैं, this can be done in how many ways? 63 ways, right? 63 will be how much? 20. When you add them, you get the same answer, 116. As simple as that, right? Okay. Anyway, so let's go on to the next question, guys. Very interesting question. Okay, again, one of my personal favorites. Find the number of diagonals of a regular decagon. Okay, so let's start small. Okay, let's say if you have a square. Okay, a regular polygon having 4 sides. Okay, if you observe, there are 4 vertices. मैंने red में दिखाया यहाँ पे, right? Okay, these 4 vertices are 4 points here, right? इन 4 points को join करके, guys, हम लोग कितनी line form कर सकते हैं? This can be done in 4C2, like 6 lines, right? If you observe, guys, a square has 4 sides, right? 1 2 3 4. Okay, तो अगर इन चारों पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग 6 लाइन बना सकते हैं. From these 6 lines, अगर मैं 4 subtract कर दूं, okay, that is the number of sides. I have exactly 6 minus 4, exactly 2 diagonals, right? Okay, so basically I did 4C2, that is 6 minus 4, I got 2 diagonals, right? Same way, if suppose I have 5 points, a 5 pointed regular polygon, it's a pentagon, regular pentagon. Okay, I can make 5C2, that is 10 lines here, right? 5 point में से, okay, आपको कोई भी 2 point select करने line form करने के लिए, that can be done in 5C2 or 10 ways. So I have 10 lines possible, right? Okay, so out of these 10 lines, there will be 5 sides, right? A regular pentagon has 5 sides. So diagonals, guys, कितने होंगे? 10 minus 5. You can observe here, there will be exactly 5 diagonals, right? 1 2 3 4 and 5. Okay, so 5C2 में से आपने 5 subtract कर दिया from here. That is the number of diagonals which you have, right? So from here we get the idea, right? If you have a regular regular polygon having n number of sides, guys, the number of lines you can form by joining these endpoints is nc2, right? n into m minus 1 divided by 2. उसमें से हम क्या करेंगे? Exactly n subtract कर देंगे. That's the number of sides. So number of diagonals क्या बचेगा? nc2 minus n. Okay, nc2 was n into m minus 1 divided by 2. Okay, cross multiply, you have n into m minus 3 divided by 2. Okay, this is what we have, right? The number of diagonals of a regular polygon having n number of sides, it's n into n minus 3 divided by 2. You can remember this as a shortcut also, or a formula also. Okay, so let's go on further, guys. यहाँ पे question पूछता है regular decagon. Decagon will have 10 sides. Deca is 10, so we put n equals to 10 here. Okay, and we get 10 into 10 minus 3 divided by 2. Okay, so we get 35. Okay, I hope you're understanding this. All right, अब इसी को slightly twist कर लेते हैं वो लोग. Okay, many times they say find the sum of the interior angles or sum of all the interior angles for a regular polygon having 35 diagonals. Okay, just a combination of this and geometry we have seen previously. Okay, तो हम क्या करेंगे? If you have 35 diagonals, okay, we'll back calculate the value of n as 10. Okay, and once we find the value of n as equal to 10, we'll use the formula n minus 2 into 180 degrees, sum of the interior angles of a regular polygon. Okay, तो यहाँ पे हम n equals to 10 put कर देंगे. 10 minus 2 is 8 into 180 is 1440 degrees, right? ये उसका आंसर होगा.